को ये इशू नहीं है कि जी कैश पे काम हमें करना है तो फिर हमें एक पेमेंट सोल्यूशन पे मतलब चाहिए नहीं, बिकॉज हमें डॉक्यूमेंट नहीं होना। तो ये तो वो सेगमेंट है जो कि डॉक्यूमेंटेड सेगमेंट है, उसकी अलग चैलेंजेस हैं, राइट? ठीक है, टैक्सेस, कंप्लायंस, परसीव्ड हरासमेंट, ऑल दोस इश्यूज असाइड, दे आर इन द डॉक्यूमेंटेड ग्रुप, तो उनके अलग चैलेंजेस हैं। देन वी लुक एट द लार्जर सेगमेंट ऑफ रिटेल जो 80+% है, जिसे हम कहते हैं कि भी लाखों दुकानों की बात कर रहे हैं। यहाँ तो हम चंद 20,000 30,000 दुकानों की बात कर रहे हैं, वहाँ लाखों दुकानों की बात कर रहे हैं, छोटे से छोटे से छोटा, उसके अलग चैलेंजेस हैं। और उसके अंदर चैलेंजेस जो हैं वो यही टैक्स रिलेटेड हैं, या डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर है, या अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी है, या मार्जिन ही ऐसे हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स देयर। तो आई थिंक एक तो इसको हम क्लैरिटी से देख लें कि भी दे आर टू सेट्स ऑफ, लार्जली ब्रॉडली स्पीकिंग, टू ग्रुप्स, सेगमेंट्स, एंड देयर चैलेंजेस आर डिफरेंट। अगर ब्रांड्स की बात करें या ऑर्गेनाइज रिटेलर्स की बात करें, उनके चैलेंजेस तो ये है ना कि उनके पास a lot of stores you'll go to, my store, somebody else's store, we'll have 2 or 3 POS machines, POS card machines. We'll have then we'll also have an internet payment gateway, one in most cases, sometimes two also, depending, right? As a backup, because हमारे यहाँ बैकअप वाला कल्चर बहुत है कि हर चीज़ का आप एक बैकअप रखो। बिजली का बैकअप भी है, भी कार्ड मशीन का भी बैकअप होता है। तो वो तो एक अडॉप्शन तो है। उससे रिलेटेड चैलेंजेस ये हैं कि भी एक जगह पे कम होता है। बैंक जिसका किसी पॉज मशीन है वो अलग है, इंटरनेट पेमेंट की अलग है। अगर सेम बैंक है या सेम फिनटेक है, वो भी एक पोर्टल पे अमूमन कम ही मिलता है आपको, और उसके रिकंसिलिएशन और बाकी इश्यूज असाइड एंड ऑल दैट। तो ये तो कुछ आई वुड से कि मोर ऑपरेशनल एंड उस तरह के चैलेंजेस हैं, जिसमें आई थिंक काम काफ़ी हो रहा है। असल जो बड़ा जो ग्रुप है ना, just which is the smaller stores and the undocumented or the resistant group of retailers, उनके challenges तो यही हैं कि कैश का इस्तेमाल आसान है उनको आगे पे। असल में सबसे बड़ा इशू ये है, जस्ट एंड हियर, रिगार्डलेस ऑफ द ग्रुप, इसके पीछे सप्लाई चेन जो आपकी वैल्यू चेन है, सप्लायर है सब है, वो तो कहते हैं कि कच्ची पर्ची में दूंगा। तो फिर वो अगर आप यहाँ से आप डिजिटल पेमेंट ले भी रहे हैं, लेने के तैयार भी हैं, आपका चेन टूट जाता है। और आपने अगर कंप्लायंस करनी है तो फिर आप फंस जाएंगे, बिकॉज आपने पीछे तो कैश की पेमेंट की हुई है, कच्ची पर्ची की हुई है, या फलाना की हुई है। तो देयर आर लॉट ऑफ intricacies which are addressing payment issues and uses of cash and the adoption of digital payments. And of course, the next step is omni-channel, regardless of and I think when we look at different groups, just like consumers की बात हुई, every consumer is different, or you can segment them similarly. Retailers के अंदर भी अलग-अलग challenges, and I think आप लोग you are all here, you are looking at how to crack those issues and crack those problems, and I'm sure we talk about that. Thank you. Thank you, Sundar. Amar, so since you are the only person representing a bank today here in this forum, Asfandiyar ने जो बात की, so banks बड़े अरसे से they have been trying to onboard all these retailers in different segments. So हमने देखा है कि जो top segment है tier 1 retailers का, वो तो काफी हद तक banks ने उनको serve भी किया है, और अब fintechs भी उनको serve कर रहे हैं. But when you talk about going downstream, और आप जो ये छोटे मिड टीयर या जो लो टीयर दुकानदारों को जब आपने सर्व करना है और उनकी पेमेंट्स को डिजिटाइज करना है, तो एक तो ऑपरेशनल चैलेंज जो बताया है और सप्लाई चेन रिलेटेड चैलेंज जो असफंदियार ने जिक्र किया है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, फ्रॉम द एज अ सप्लायर ऑफ दीज सर्विसेज, आप क्या समझते हैं कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो बैंक्स को रोकते हैं, जो इसमें फ्रिक्शन पैदा करते हैं टू ऑनबोर्ड दीज टाइप्स ऑफ मर्चेंट्स, और उनको आप डिजिटाइज या उनकी पेमेंट्स को डिजिटाइज क्यों नहीं कर पा रहे पाकिस्तान में? थैंक यू ऐसा देखें, ऐसे फ्रॉम अ बैंकिंग परस्पेक्टिव अगर आप थोड़ा पीछे चले जाएं, लेट्स सी टू द अर्लियर डेज ऑफ द पॉस मशीन, एंड जब ये पेमेंट्स सारी हमने ऑफर करना शुरू की थी, तो पहले तो जैसे असफंदियार ने कहा कि पहला हमारा टारगेट हमेशा से वो ऑर्गेनाइज सेक्टर था, बिकॉज इट वाज ईजियर, दे वर डॉक्यूमेंटेड, दे वर बैंकिंग, एंड दे डिडंट हैव द टैक्स इशू दैट द अदर सेक्टर हैड, and there wasn't a resistance to change. So once we had done that, obviously the push coming from our regulator as well was to go downstream, and such a big opportunity out there. So there was a lot of work done at the regulation level as well, jisme very recently I think a year or so ago, I believe, they came out with regulations which would allow us to onboard merchants with very minimal paperwork. So आज अगर हम जैसे हब को ऑनबोर्ड करते हैं
और एक किराना स्टोर ऑन बोर्ड करने जाते हैं तो पेपर वर्क ऑलमोस्ट सेम रिक्वायरमेंट थी, बट विद दिस चेंज इन रेगुलेशन ये अब ईज ऑफ हुआ है। अच्छा, उससे एक और फायदा जो हमें नजर आ रहा है कि एक एलिमेंट ऑफ ट्रायल आ गया। सो द न्यू रेगुलेशंस अलाउ कि आप ऑन बोर्ड हुए एंड यू गेट अ लिमिट ऑफ ट्रांजैक्शन। सो आप उस लिमिट में रहते हुए यू एक्सपीरियंस द सर्विस, यू सी हाउ इट गोज, एंड वहाँ पे बिकॉज आपकी कार्ड मार्केट इंक्रीज हो रही है, आपकी इशुएंस साइड पे इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा आ रहे हैं, तो देयर इज़ अनफ मार्केट आउट देयर टू पुश डाउन कि भाई मशीन होना ज़रूरी है या डिजिटल एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है। So what we're seeing now is that demand which never existed downstream is coming up. So the challenge really is how do we as banks start servicing that? Obviously, there's a very high cost in going downstream and servicing these smaller merchants. And that's why we at Alpha primarily, we believe we can do this in a much more efficient manner through collaboration. And that's what we're right now focused on. We're working with Fawad, Paymob, and with other players as well to go downstream. Our prime objective right now is कि यार ऊपर वाली segment को तो हम हमारी branches के through भी cover कर लेते हैं, लेकिन नीचे जो है उसके लिए we need help, and that's where the partnership spirit comes. बिल्कुल। और ये जो आपने बात की कि यार पहले जो माइंडसेट था बैंक्स में, आप 4-5 साल अगर पीछे चले जाएं तो इट वाज मोर कि DIY कि जी हमें ही सब करना है, वी विल डू इट आवरसेल्व्स, पूरा इकोसिस्टम जो कहता था कि मैं ट्राई करूंगा। सो नाउ वी सी दैट देयर आर कोलैबोरेशंस कमिंग अप बिटवीन बैंक्स एंड फिनटेक प्रोवाइडर्स, जहां पे इस रिस्क को आप मिटिगेट कर रहे हैं और डाउनस्ट्रीम जाने के लिए आप मिलके तो उसी कॉन्टेक्स्ट में पेमॉब being one of the international fintech, very large in Middle East and North Africa region, फवाद, पेमॉब की पाकिस्तान में जो स्ट्रेटजी है वो कोलैबोरेशन की है, obviously because you're working with Bank Al Falah, and is that like is the target to go downstream while also talk about creating omni-channel payment digitization strategy for merchants? क्या इसके ऊपर थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे? What is the strategy overall? आप किस तरह इसको इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाह रहे हैं through पेमॉब? Sure, thank you, Hassan. So yes, so firstly it's collaboration, and जैसे मारने का मेरे ख्याल से आज से अगर हम 4-5 साल पहले चले जाएं तो I think the collaborative mood was not on either side of the thing, right? So fintechs wanted to disrupt the banks and the banks wanted to maintain their poise, right? But now I think it's more about that they want to collaborate together. They want to collaborate together in order to make sure that we are able to deliver the change that we are promising to the market. That's one part of this. How is Paymob doing? So we actually are I would define Paymob as a distribution company who distributes omni-channel payment technology to the market. So we set up an infrastructure. We make sure कि उस infrastructure के ऊपर हम हर किस्म की payment को process कर सकें, whether it is for an online business, whether it is for an offline business, whether it is for social commerce businesses, whether it is for small retailers or large retailers, right? But our focus and our experience, like for instance, we have right now around 150,000 merchants across the globe. Majority of our merchants come from the SME segment. So even in any economy, SME is the main contributor to the economy, right? So 70% of the GDP comes from SMEs. So the important thing is to digitize them as well. So a lot of payment related focus, like Amar said, initially was on the more organized sector. What we want to do is with the new technological developments that are happening around the world, like for instance, we are bringing soft POS, we are bringing payment links, what we are trying to do is with minimal efforts of the merchant, be able to capture the payment itself, right?
And therefore, with that intervention, we want to capture that SME segment, which remains still a greenfield in Pakistan. So अगर हम अपने SME segment को इस वक्त gauge भी कर लें, which is by lowest numbers जो हमारे पास available हैं, is not less than 5 million, and we have like 90,000 POS machines out there with 35,000 retailers actually deployed, digitized. So there is a huge market in millions जो कि आज जिनके पास नहीं है. That's what we want to capture. बिल्कुल. और अच्छा, डाउनस्ट्रीम तो एक चैलेंज एक है हमारा. ऑब्वियसली ऑल फॉर वी आर वर्किंग टू try and bring them into the digital economy and everything. Retailers की भी बात करें साथ, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा. As Kinu, which is one of the largest payment acquirer, merchant acquirer, fintech in Pakistan, आप लोगों ने जो लार्ज रिटेलर्स हैं उनकी पेमेंट्स की जो एक्सेप्टेंस है उसको तो डिजिटाइज किया है. बट डू यू थिंक दैट हैविंग अ EMI लाइसेंस आल्सो, जहां पे आप एक इलेक्ट्रॉनिक एज एन इलेक्ट्रॉनिक मनी इंस्टीट्यूशन, that is where the game ends, or this is just the start of having an omni-channel strategy jahan pe aap now, people are talking about buy now pay later, people are talking about merchant lending. So what's next for Kinu? I mean, where you see yourself in the next 3 years, 5 years in providing these omni-channel payment acceptance solutions to your merchants? थैंक यू एसर. हमारा ये ख्याल है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं, दे नीड टू बी इन प्लेस. वी when we started, that was about 7 years ago, when we started processing payments for the first time. We were the only fintech in the country which was doing so. We quickly realized, after doing some experimentation as well, that basic infrastructure of acceptance वो इस मुल्क में बहुत कम है. जैसे फवाद ने rightly so कहा कि जहाँ potential अगर हम compare करें is about 2 million for POS and overall acceptance of 5 million merchants. वहाँ about 100,000 machines is basically nothing, right? But what drives the acceptance of machines? Omni-channel experience is obviously a given, but what entails an omni-channel experience? What brings about an omni-channel experience and its usage? तो उसमें सबसे basic बात आ जाती है financial needs of a merchant, right? फाइनेंसिंग एक बहुत बड़ा मसला है. हम सारी कंपनीज मिलके जो काम कर रहे होंगे, वी विल बी एक्सपेंडिंग, trying to reach out based on our muscle, based on our appetite to the farthest corners possible. जो अगला पार्ट होगा, जहां अभी मेरे ख्याल से किसी के पास इसका सोल्यूशन नहीं है, where government needs to step in and help us, वो है कि हम इनको क्रेडिट कैसे एक्सटेंड कर सकें, उसको रिकवर कैसे कर सकें, सिक्योरिटी सिस्टम कोई ऐसा डिवाइस कर सकें कि रिकवरी आसान हो जाए. Once that happen, that will be the key, I believe. So for Kinu, it is cut out. We are all about servicing the merchant. We are all about giving them a payment experience, bringing them, making the financial inclusion by opening up wallets easy for them, very quick. A 1-minute wallet sign up is what we are looking for. Terminology बहुत दफा सुनी है, but बैंक्स की जो डोमेन है, it is tough on its own self. वो उस डोमेन के लिए are doing a great job. They are designed to do it. Whereas bringing merchants on board and consequently bringing those new customers जो हर साल ऐड हो रहे होते हैं with debit cards and credit cards, उनको लेके आया जाए और इस्तेमाल करवाया जाए टच पॉइंट्स पे. तो I think it is cut out. For the next 3 years, our job is to expand, include, and embedded finance is another terminology that people use. But I think a payment company is rightly placed to do that. I think that will bring about the real change that we look for. Ripe market है Pakistan, but unfortunately, जो आजकल के मसाइल हैं, एक पेमेंट्स एंटिटी के लिए मशीन्स या टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर रॉ मटेरियल होता है, उसमें जो हम डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, आई होप वी गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन.
so that हम real effect दिखा सकें अब आने वाले 3 सालों के अंदर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो असफंदियार, जब बात होती है सप्लाई चेन रिलेटेड, जो आपने एक मसला हाईलाइट किया जहाँ पे अपस्ट्रीम पेमेंट्स आर मेड बाय रिटेलर्स इन कैश, राइट, या कच्ची पर्ची की जो आपने जिक्र किया। सो जब हम ऑन द अदर साइड जो कंज्यूमर से अगर हम पेमेंट डिजिटली एक्सेप्ट करवाएं, तो ऑब्वियसली यू मेंशन्ड दैट बिकॉज देयर इज अ लैग इन द सेटलमेंट प्रोसेस, जिस तरह उनको उनके अकाउंट में पैसा मर्चेंट के अकाउंट में देर से आता है, दैट एक्चुअली मेक्स इट अ बिट ऑफ अ ब्रोकन प्रोसेस दैट यू मेंशन्ड। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो अब स्टेट बैंक का जो इनिशिएटिव है रास्ट का, जिसमें हम इंस्टेंट पेमेंट की बात कर रहे हैं, और अब जो पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट का जो एक यूज केस भी अब स्टेट बैंक उस पर बैंक्स के साथ और फिनटेक कंपनीज के साथ मिलकर उस पर काम कर रहा है, हाउ विल दैट हेल्प मेक दिस प्रोसेस मोर एफिशिएंट, और आप एज अ रिटेल रिप्रेजेंटेटिव आप उसको कैसे देखते हैं? नहीं, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड इसमें देखें इन द एंड इट्स अबाउट access and how sort of convenient it is. I mean, based on कितने steps involved हैं, how easy is it to actually transact. Access to those those options, whether it's any kind of payment option, digital payment के अंदर आप RAS को use करें, IBFT को use करें, whatever, however you want to do it. But probably it should be just one interface. मेरे ख्याल में आसान होना चाहिए, चाहे वो बड़ा रिटेलर छोटा रिटेलर हो, उसके लिए आसान हो कि भी वो किसी भी किस्म की पेमेंट, चाहे वो कस्टमर से जैसे कि अभी तो हम पॉज मशीन की बात करते हैं या इंटरनेट पेमेंट किट की बात करते हैं, हालांकि काफ़ी प्रोग्रेस हुई है कि नाउ द वॉलेट्स आर आल्सो यू कैन यूज द वॉलेट्स, जायज़ कैश, इजी पैसा वगैरह, और भी अकाउंट टू अकाउंट का भी काम हो रहा है, लेकिन वो भी अभी उस तरह से सीमलेस नहीं हुआ अभी तक, मुझे लगता है। इंटरनेट पेमेंट गेटवे से फिर भी है, पॉज मशीन्स पे तो शायद वो इनेबलमेंट नहीं है जो आपको इंटरनेट पेमेंट गेटवे पे मिलती है। And then when we move back, similar sort of we have to make it easy. Internet banking का भी challenge है ना, कि इंटरनेट बैंकिंग भी कितने लोग यूज करते हैं बिजनेस के लिए, पर्सनल तो बेतहाशा है, बिजनेस के लिए कितने लोग यूज करते हैं, उसके अंदर इश्यूज हैं, बट प्रोडक्ट्स आर कमिंग आउट। बट आई थिंक वी रियली नीड टू मेक द एज अ रिटेलर, आई वुड से, मेरे ख्याल में ऑप्शंस जो हैं वो बड़े आसान होने चाहिए, हर चीज़ उसमें डिलीवरी होनी चाहिए, जैसे तैसे आप करना चाहे कर सकते हैं। आपको पीछे भी फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा, ये तो मैं ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर की बात कर रहा हूँ, हम किराना वालों से बात करते हैं, हमारा क्योंकि ताल्लुक होता है रिटेल के अंदर, या छोटे रिटेलर होते हैं, वो तो कहते हैं यार हम तो जायज़ कैश इसी पैसा भी कस्टमर से लेते हैं विदाउट एनी मशीन, मोबाइल टू मोबाइल, लेकिन जब इतने पैसे आ जाते हैं तो मैं पीछे अपने सप्लायर को क्या जायज़ कैश इसी पैसे से पे कर सकता, लिमिट उसमें मसले मसाइल हैं। तो आपका कहीं ना कहीं आके हम वी हैव टू लुक एट द एंटायर ट्रांजैक्शन end to end, and I think that's where we have to work together कि हम फिगर आउट करें रेगुलेटर के साथ, और सोल्यूशन आप जो काम कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, रियली कहाँ पे मिल कैसे सॉल्व, मुझे फील होता है, हालांकि काफी प्रोग्रेस है कि अलग अलग थोड़ा पैरेलल काम हो रहे हैं, इवन रास भी काम हो रहा है, ऑनेस्टली उसके बराबर में IFT भी चल रहा है, बैंक्स का अपना एक पॉइंट है, फिनटेक्स का अपना है, स्टेट बैंक का अपना है। तो खैर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन आई थिंक वी नीड टू नॉट and I know you guys are working together a lot of the places, but with retailers and the regulators हमें और आई थिंक और नीड है इसके ऊपर काम करने के लिए, एंड आई थिंक वी आर नॉट फार अवे। जिस तरह से पेमेंट्स की जो तादाद है वो बढ़ रही है, नज़र तो आ रहा है, लेकिन अभी हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे नहीं आए हैं। We are not going 100%, 200, 300, 400, 500%, 500%. We are going 50%, 70%. So I think that's where we need to start thinking bigger and work together. बिल्कुल, और इसमें जो ई कॉमर्स में अगर हम फोकस करें, ई कॉमर्स की जो पेमेंट्स हैं उसमें जो लाइन शेयर है दैट इज COD, व्हेन यू टॉक अबाउट collecting payments from the customers against the goods that are being shipped. So COD payments में तो पेमेंट भी रिटेलर को और देर से मिलती है। If you look at the entire value chain, the way cash moves in that value chain. So अमार, हम as an industry अभी तक COD payments की डिजिटाइजेशन पे कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाए हैं। उसके क्या रीजंस हैं, अगर आप in terms of देखिए
COD, from our perspective, the solutions to digitize COD already exist. I mean, we've seen during COVID, there was a spike in digital payments. Some online merchants have also gone for Jazz Cash and, wallets, key acceptance and sara kuch. But I think the inherent comfort that the customer draws from cash on delivery, जो एक इनहेरिट है कि जी मेरे पास चीज़ आएगी, मैं उसको देखूंगा, सही हुई तो है, वरना मैं वापस कर दूंगा और मैं वहाँ फटा डाल दूंगा, जिसकी वजह से कोरियर कंपनीज आके क्या कर लेंगी, उसकी चीज़ उसको वापस मिलेगी. सो ये एक कस्टमर की जो अभी भी विश है, ये हमें तो वो नज़र आ रहा है कि वो उसको चेंज करना ज़्यादा ज़रूरी है. You mean to say कि ट्रस्ट डेफिसिट अभी भी बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से जो है वो कस्टमर जो है कंफर्टेबल नहीं होता. Yeah, कि I mean, वो just to give you an example, I mean, I'm sure everyone's had these experiences with the RAS. You order something, you get it, and it's not the right thing, and then you're like, यार काश मैं COD कर देता. अब मैं कदर जाऊँ, मैं वापस जाऊँ, इसको रिटर्न कैसे करूँ? फिर आप 3 दिन भूल जाते हैं तो वो उसका रिटर्न पीरियड खत्म हो जाता है. सो आई एम जस्ट सेइंग कि ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चेंज हो रही हैं. सप्लायर्स भी जो हैं उनको भी देखना है कि वो क्या चीज़ शिप कर रहे हैं. आपकी कस्टमर्स जो हैं उनको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है. एक उनको कंफर्ट देनी पड़ेगी कि भाई जो आप कैश ऑन डिलीवरी से आपको कंफर्ट ड्रॉ होती है, वो आपको इलेक्ट्रॉनिक उसके लिए भी है. और उस पर हम जो क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स वाली साइड है, उसमें एक इनहेरेंट प्रोटेक्शन है विच इज़ अराउंड चार्ज बैक्स एंड स्टफ. आई थिंक कि यहाँ पे कस्टमर्स इतने अवेयर नहीं हैं. वो भी एक नॉलेज है दैट आई गेस द बैंक्स नीड टू also tell the customers to encourage the adoption as well. So that's something on the banks as well कि आप e-commerce कैसे push भी करें. आप तो इसको कि वही ब्रांड्स जो दुकान के ऊपर पॉज मशीन पे डिजिटल पेमेंट लेते हैं, वो 50% तक भी जाती है कहानी. वही ब्रांड्स, एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स. लेकिन जब वो ऑनलाइन बेचते हैं तो 80-90% कैश होता है, यानी 20-30 मैक्सिमम 30% भी नहीं, 20%, 15-20% डिजिटल पेमेंट होगी और फिजिकल स्टोर पे वो 30 से 50% डिजिटल पेमेंट हो जाती है. तो दैट मीन्स कि इट्स नॉट द इशू ब्रांड तो है, लेकिन ब्रांड एक्सपीरियंस क्या दे रहा है ऑनलाइन, ट्रस्ट का इशू है कि भी चीज़ टाइम पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी, सही पहुंचेगी, इवन इन द केस ऑफ अ ब्रांड. तो दैट मीन्स कि इट्स ट्रस्ट इज अ बिग फैक्टर. देन ऑफ कोर्स वी हैव द इशू ऑफ कैश भी का चाहता है कुछ केसेस में बड़े मर्चेंट, लेकिन कस्टमर के भी इश्यूज हैं कि वो कितना के पास कार्ड है, नहीं है, इस्तेमाल करना चाहता है, नहीं करना चाहता. तो ये मैं थोड़ा सा शेयर करना चाह रहा था. I think one important step maybe in this direction could be collaboration between the logistic companies and the fintech players or the banks, who can be the conduit of the digital payment collection from the end consumer instead of just talking about the entire digitization of the COD in the first place. Just a thought there. Fawad, e-commerce again is right now being, it's a top-down in tier 1 segment is more into, because volume है वहाँ से generate होते हैं and bulk of the e-commerce payments are coming through that segment. But there is a challenge. There's a segment. There's a mid-tier segment where the volumes are not bad, but the capability of those merchants themselves to have a digital presence is a challenge, right? And so, as PayMob, what is the way to crack this challenge for those retailers who, because there are models available we've seen in our neighboring countries also, where mid-tier merchants having no digital presence, having a website or a storefront, are still able to accept payments digitally. So what are those mechanisms that can be put in place for this particular segment? Sure. So, like I said, when we focus on SMEs, we try to focus on all type of SMEs, right? SMEs who have a brick and mortar presence, and SMEs who are digital, who do not
have a brick and mortar presence. हमारे पास मैं पेमॉप के एक्सपीरियंस से ये बता सकता हूँ कि हमारे पास we have a special sales team focusing on this segment, जिनका काम ये होता है कि वो merchant को from the time that he shows his interest, whether through a phone call, we have a dedicated call center, they can show this interest through the website, वो जिस तरह से भी उन तक हमारा मैसेज पहुंचे किसी सोशल चैनल, फेसबुक, whatever. Once it comes to us, we have a team that calls them back, handholds them, make sure that we are able to help that merchant through the journey of migrating into a digital payments entity, right? So it is tedious, but this has to be done to handhold. Second thing is you have to invest into technology, which is simple to adopt, right? तो अगर मैं उससे ये बोलूँ कि यार ये API integrations हैं और इसको integrate कर लो किसी अपनी website से, it's not going to happen, right? So you have to provide them with plugins which they can just install, or which they can just add as a code to their website. Or if they don't have a website, they don't have the capability of developing a website, they can still be onboarded on our platform, have an access to our page and sell their commodity, right? Through payment links. And so it's about understanding the customer, it's understanding the merchant and providing a payment solution according to that merchant. And like you said, if it is in the middle tier, even on the small and micro, you have the solutions out there in order to make sure that they are able to convert onto digital. Okay, so I have one, question from Saad and Amar. Saad, if you can just take it first. So I myself have experienced, shopping in. Okay. Yeah. So I myself experienced this thing that I have gone to shop in certain places in Karachi where merchant has told me that okay, they don't accept cards, they don't have a POS machine, but they are going to take fund transfer as a mode of payment, right? So even in some shops they have actually put down their entire bank account number with the bank. That okay, sir, you can, IBFT me or fund transfer me this amount. So, I mean, why are we, letting IBFT rail being used for payments, which is not made to be like that, because उसके अपने मसले हैं. But I think this talks about a need, a gap in the overall offering from the financial institutions, जो कि जिसको bridge किया जा रहा है by merchant using the unconventional rails of fund transfers. ऐसे बात तो सही है. It's an observation. It is practiced not that widely in the context, but still it is being practiced. देखें ये secondary usages prop up होते हैं, मुख्तलिफ products के होते हैं, likewise payments is one of them. But ये sustainable तरीका होता नहीं है transaction करने का. आप इसको चूँकि एक point ऐसा भी आएगा कि जब आप payment process करेंगे और आपके पास SMS नहीं पहुँचेगा, that is when you become the problem starts. इसी तरह जो भी पेमेंट ऑफरिंग्स एक पेमेंट कंपनी कर रही होती है वो प्रॉपर सर्टिफिकेशन के थ्रू गुजर के आ रही होती है और कंज्यूमर को भी प्रोटेक्ट कर रही होती है और मर्चेंट को भी प्रोटेक्ट कर रही होती है. सो यूजिंग रेल्स ऑफ IBFT इज गोइंग ऑन बट इट्स नॉट गोइंग टू सस्टेन दैट मच. ये पूरी दुनिया के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से इट्स एब्सोल्युटली एविडेंट. किस नीड को वो पोर्ट्रे कर रहे हैं, आई थिंक दिस इज द रॉन्ग डायरेक्शन. वो शायद ये करना चाह रहे हैं कि वो अपने पर्सनल अकाउंट में पेमेंट ले रहे हैं, बिजनेस अकाउंट में नहीं ले रहे, टू अवॉइड टैक्सेशन. बट ये मैं बता दूं, देखें, देयर इज नो शॉर्टकट टू इट. आप आज से 10 साल पहले की बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं लगती, जब हम बैठ के बात कर रहे होते थे कि पाकिस्तान में 25,000 मशीनें हैं, ठीक है. नाउ दैट हैज चेंज क्विकली एंड थिंग्स विल चेंज. टैक्स से बचना ऑप्शन नहीं रहेगा. गवर्नमेंट को, चेन स्टोर एसोसिएशन को मिल के, हम लोगों को मिल के, PFA को, वी शुड कम आउट विद better tax regimes
that will help everybody. और फिर हम ना इस तरह की makeshift solutions की तरफ ना जाएं, not gonna help. जो होना चाहिए प्रॉपर तरीके से पेमेंट हो, उसकी रिजीम्स फ्रेंडली हो, और वो लोगों को इंटर्न उनकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करने के बाद हेल्प करें. तो आई डोंट थिंक हमें इसकी तरफ या इसको रेगुलराइज करने की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज एवरी methodology of payment should not be regularized. It's going to be counter positive rather than be in benefit of anyone. Amar, just add to what Sadir said. इसमें जो रास्त का जो पर्सन टू मर्चेंट और पर्सन टू पर्सन जो रेल अब एस्टैब्लिश हो रही है, तो ये जो IBFT वाला बिहेवियर है, ये तो उस तरफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा जहाँ पे लोग इंडिविजुअल अकाउंट्स में ही पेमेंट P2P में भी लेना स्टार्ट कर देंगे. देखें, रास्त के अंदर इस वक्त जो P2P रेल यूज़ हो रही है इस काम के लिए, वो इज़ द सेम थिंग. There's got nothing to do with it. वो उसके अंदर हमारे लिए from a monitoring perspective we have now been forced to add a lot of variables, जहाँ पे हम ये monitor कर रहे हैं कि छोटी multiple transactions जो आ रही हैं इसकी क्या है, और हमें सब हम monitor कर रहे हैं, but ये AR भी monitor करवा रहा है through the state bank on this thing. बट जो रास की P2M वाली रेल आएगी, that is eventually going to solve this thing and regularize it, but that would again be into a merchant account, and it will not be a free rail. So the concept of a payment to a merchant being a completely free rail does not exist. It's a cost, because there's a cost to serve and the cost to provide that rail. So that needs to be there. You're spot on there. Last question from Aswandhyar. So Aswandhyar, technology or operational challenges से overarching एक जो सबसे बड़ा challenge है, वो सही information या सही knowledge का नहीं होना है in the retail, especially mid to downstream segment per se overall. So in terms of the knowledge dissemination, giving the right knowledge, you as an association, what are the kind of measures that you guys are taking to educate the retailers, to educate the merchant, the benefits of, digitizing their payment acceptance as opposed to the way they are, operating today? Sorry, Sundar, before you start. I'll just give you 2 minutes. I know that we're short on time, so I have to request all of you to sort of wrap up. Very short, very short. अच्छा, इसमें फंडामेंटली तो पहले काम तो ये था ना कि हम मेक श्योर करें कि रिटेलर्स डॉक्यूमेंट हो जो नहीं भी थे, और साथ में उनके मसले हल करवाएं टैक्स पर्सपेक्टिव से FBR के साथ, ताकि वो जो फ्रिक्शन है वो थोड़ी सी कम हो. उसमें अभी चैलेंज यही है कि टैक्स रेट्स और सर्टन एस्पेक्ट्स आपको आसानी होती है, लेकिन हरासमेंट जो होती है ना वो अभी भी है, और प्रेडिक्टेबल कंटिन्यूटी पॉलिसी नहीं है. उसमें वी वर्क विद द गवर्नमेंट एंड वी आर वर्किंग विद रिटेलर्स and to bridge that gap and help them ताकि solve वो problem, even if it's baby steps at a time. Secondly, जो fintechs, banks काम कर रहे हैं उनको promote करें, मिलके एक तो promote करें और उन तक पहुँचाएं ताकि they realize the possibilities. A lot of retailers, you'd be surprised, don't actually know all the options out there until they stumble upon them. So that's also a big factor कि awareness ही नहीं हो पाती of all the options available and what is coming in the roadmap moving forward. So I think basically isko main kar sakta, but I think we have to, again, team is working together and taking things, keep on going forward. It's a continuous, collaborative way of handling things. Thank you very much, gentlemen, for your views. And with this, we conclude the panel. Thank you, Ji. Over to you. Ji. Thank you, all of you, for sharing your insights on the payment and the fintech inclusion, and जितने भी vendors हैं, retailers हैं, people from e-commerce. This was an extremely important conversation for all of you, because payment integrations are going to define the future of e-commerce for so many of us. And obviously, as a customer, it matters a lot. वही बातें जो हमने सुबह की कि rider मेरे घर आके 2 दफ़ा phone करेगा, yeah, I'm going to tap and make sure that my transaction goes smooth. So thank you. With that, I have to move on, and I have to reiterate the importance of time. And I know that in a conference, the second half is the hardest. And as we move towards the end of the day, it gets even harder for all the speakers and the participants to keep, stay engaged to the conversations. But we have our next speaker, and he's also going to be starting the session. I'm going to invite
all the panelists and moderators on the stage. So then, all of you could just